Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is what are errors in perception? Perception, what is, or we can say, what is perceptual error? A perceptual error is inability to judge humans, things or situations fairly. कि परसेप्चुअल एरर हो गया कि अगर पहली ही बात हम परसेप्शन किसको बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया, कोई एबिलिटी टू सी द थिंग्स थ्रू सेंसेस। और जब परसेप्चुअल एरर वो होता है जहाँ पे हम गलती करते हैं किसी चीज़ को जज करने में या किसी सिचुएशन को जज करने में फेयरली। नोइंगली और अननोइंगली वी मिस्टेक द स्टिमुलस एंड परसीव इट रॉन्गली। मेनी टाइम्स द प्रेजुडाइसेस in the individual time of perception, unfavorable background, lack of clarity of stimulus, confusion, conflict in mind and some other factors are responsible for errors in perception. ये सारी चीज़ें जो हैं they are responsible for errors in perception. Suppose और परसेप्चुअल एरर, सपोज नोइंगली और अननोइंगली आई में से, अगर हमारा स्टिमुलस गलत हो, हम यहाँ से कोई चीज़ पर हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं रॉन्गली, चाहे किसी भी वजह से, एनी रीज़न में, देयर में बी एनी रीज़न, चाहे कन्फ्यूजन हो या फिर देयर विल बी अ लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ स्टिमुलस या कॉन्फ्लिक्ट हो माइंड में, इन सारी चीज़ नोइंगली और अननोइंगली वी मिस्टेक द स्टिमुलस। हम कभी कभी गलत चीज़ों को परसीव, हम गलत स्टिमुलस देते हैं या किसी चीज़ को गलत रॉन्गली, वी डोंट जस्ट जज इट फेयरली, तो हमारा जो परसेप्शन है वो गलत डायरेक्शन में जाता है एंड देयर व्हाट उधर क्या, वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे परसेप्चुअल एरर आ जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, जैसे कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है इन माइंड और अनफेवरेबल बैकग्राउंड है, या वी कैन से लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ स्टिमुलस है। ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर्स इन परसेप्शन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हाउ कैन वी रिड्यूस दीज एरर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड बी नोइंग वन सेल्फ एक्यूरेटली. वन ऑफ द पावरफुल वेज टू मिनिमाइज दिस distortion, we can say perceptual error or perceptual distortion, is to know yourself. First of all, you should know yourself, what you are, how you are, what are the beliefs, what are your values, how you are aware of regarding your own values, regarding your own beliefs and regarding your own prejudices. People usually misperceive others because they fail to perceive themselves accurately. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कैसे इन एरर्स को, परसेप्चुअल एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं? पहले ही हम वी शुड नो आर सेल्स नॉट अदर्स, वी शुड नो आर सेल्स एक्यूरेटली. सेकेंडली इज़ एम्फेटाइज विद अदर्स. एम्पैथी आपको पता ही होगा क्या है. एम्पैथी रेफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड बी सेंसिटिव टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. वी शुड अंडरस्टैंड अदर्स, वी शुड हैव सेंसिटिव फीलिंग्स फॉर अदर्स, देन ओनली वी कैन परसीव अदर्स वेरी वेल. अगर हमें खुद का अपना नहीं पता होगा, एम्पैथी नहीं होगी दूसरों के साथ, हाउ कैन वी परसीव द थिंग्स? देयर exists perceptual errors. If we know ourselves accurately, if we have empathy with others, then only there will be no perceptual errors. Third is, we should have a positive attitude toward everything. As we know, attitudes have a strong and long lasting effect on perception. If one holds a negative attitude towards something, our perception is undoubtedly going to be distorted. अगर हमारा किसी चीज़ की ओर नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, और it's अंडरस्टूड कि जो हमारा परसेप्शन है उस चीज़ की ओर, वो भी देयर विल अगर परसेप्चुअल एरर, और वी कैन से परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन. So we should have a positive attitude, we should not have a negative attitude. If we have negative attitude, then there occurs perceptual errors. If we have positive attitudes, then there will be no perceptual distortion. Another is postpone impression formation. That means it is natural tendency of human beings to form impression about something or someone. ये तो पता ही है, हर किसी इंसान का फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन होता है, एंड इट इज़ अ ह्यूमन नेचर. एवरीबडी फॉर्म्स इम्प्रेशन अबाउट समथिंग और समवन वेरी क्विकली. सो जब हम किसी ऐसा सुना है हमने, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन. अगर हम उस चीज़ के लिहाज से देखें कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो हमारा परसेप्शन उस चीज़ की ओर वैसा ही रहेगा. अगर हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन में उस चीज़ या किसी इंसान का नेगेटिव इम्पैक्ट रह गया, so that will be long lasting.
इन आर माइंड. अगर हमें उस इंसान या उस चीज़ के बारे में अच्छा इंप्रेशन, पॉजिटिव इंप्रेशन रहा, सो दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग फॉर एवर. दिस इज़ हेयर कम्स परसेप्चुअल एरर. अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो देयर इज़ नो परसेप्चुअल. अगर हमारा इंप्रेशन फर्स्ट नज़र में ही उसका नेगेटिव होगा तो परसेप्चुअल एरर हो सकता है. वी कैन परसीव द थिंग्स इन अ नेगेटिव मैनर. Another is communicating openly. Much of misperception in an organization arises due to inadequate communication or one-way communication. Utmost care should be taken so that message should be reached to the right person at the right time. We should take utmost care when we communicate with others. We should communicate openly. We should not be like reserved. We should communicate easily so that the person, whatever information we are going to give, that should reach to the right person at the right time, so that we cannot, neither he or she cannot perceive us badly, nor we cannot perceive the situation or the person badly. That is why we need proper communication skill. Another is comparing one's perception with others is another useful strategy to reduce perceptual errors. We should comparing one's perceptual with other is another useful strategy to reduce perceptual errors. We should compare one's perception with other. Rather, we can say, but positive one. If we'll compare negative one, then there will rise a perceptual error or perceptual distortion. We should compare in a positive manner one's perception with others so that it can reduce perceptual errors. Another important is introducing diversity management program. We should introduce such diversity management programs so that we will be easily able to communicate with each other, discuss with each other, so that our perception we should get broadened and we should perceive the things in the positive manner. The training programs mainly increase the employee awareness of differences and thus help in minimizing perceptual biases and distortion. These are whatever training programs we are giving or we just give to the students or individuals or human beings, that increases the employees or awareness, and thus these things help in minimizing perceptual biases and distortions. Because of these things we can reduce perceptual distortions or perceptual errors. These were some of the factors, or we can say through which we can reduce perceptual errors. And now I'll once more come to the points. First is how can we reduce the errors. First is knowing oneself accurately. Second is empathy with others. Third is having a positive attitude. Fourth is postpone impression formation. Fifth is communication openly. Sixth is comparing one's perception with others. And seventh, last but not least, is introducing diversity management program. These are some of the factors that can help us to reduce the perceptual distortions or perceptual errors. I hope you understand it. It was all for today. Thank you so much.